Recording in progress. Oh, rub your palms and place it on your closed eyes. Complete darkness is there. In this darkness, you open your eyes, give a light massage to your eyeballs, and let the light in very slowly. आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सब लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। और अगर जो कुछ भी पूछना हो, कल हम लोगों ने केवल एक रिवीजन किया था, तो दो जो नए लोग हैं उन्होंने लिखा कि क्या समझ में आई उनके, दो दे आर नॉट वेरी गुड, इट्स नॉट वेल रिटन। लेकिन मैं फिर से एक बात बताता हूं मैंने क्यों कहा, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ची यिन यांग, बट आई डू वांट दैट यू शुड बी प्रिपेयर्ड। मैं ये नहीं चाहता कि आपको यिन यांग में बताऊं और ची बताऊं, ये क्लास उसलिए है भी नहीं। लेकिन यिन और यांग और ची ये अगर नहीं मालूम हुआ, इफ यू डू नॉट नो यिन यांग एंड ची, then you cannot follow the further steps. So why I did that, मैंने क्यों किया ऐसा, this I want to tell you, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो कल हमने क्या किया वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने आपसे कहा, I told you that chi has two factors. Mostly we know it as yang and yin. ची में दो बातें हैं जिनको हम लोग जानते हैं यांग और यिन के टर्म्स में। दूसरा हमने कहा कि यिन और यांग में ज्यादा फर्क है नहीं। ये बात न तो मंदाकिनी जी के समझ में आया और ना ही शिवा के समझ में आया। यिन एंड यांग एक ही थैली के चट्टे पट्टे हैं, एक ही चीज के दो रूप हैं। एक ही चीज कौन सी है? एक चीज क्या है? वेव्स, है ना। यिन भी वेव्स है, यांग भी वेव्स है। वेव्स में दो चीजें होती हैं, एक वेवलेंथ होता है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी जहां हाई होती है वो सबस्ट्रैट कहलाती है, हायर फ्रीक्वेंसी सबस्ट्रैट। ये रह गई आप लोगों की बात समझने वाली, जो कल नहीं समझा आपने। लोअर फ्रीक्वेंसी एंड हायर फ्रीक्वेंसी। लोअर फ्रीक्वेंसी इज यांग, हायर फ्रीक्वेंसी इज यिन। अब ये बात समझने वाली है, क्योंकि हमने कल क्या कहा, एक्शन इज यांग, रिएक्शन इज नहीं, मूवमेंट एंड नो मूवमेंट। तो एक ही चीज है, एक चीज क्या है? वेव्स। एक क्रिटिकल वैल्यू है जहां से हम उसको कह देते हैं कि इट इज फंक्शन, और उसके नीचे हम कह देते हैं दैट इज, मतलब यिन डोमिनेटेड जो चीजें हैं उनको आप स्ट्रक्चर कह सकते हैं, और यांग डोमिनेटेड जो चीजें हैं उनको आप फंक्शन कह सकते हैं। यद्यपि स्ट्रक्चर में भी फंक्शन है, फंक्शन में भी स्ट्रक्चर है। यू कैनॉट सेपरेट, यिन एंड यांग को अलग अलग नहीं किया जा सकता, है ना। एब्सोल्यूट यांग रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही यांग आएगा
it will attract a yin. yang आते ही yin को attract करेगा. yin is the response. नहीं? So neither yin nor yang, ना तो yin ना yang रह सकता है अकेला. They cannot exist alone. एक ही चीज है वेव्स, उसमें दो बातें हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक है. एक क्रिटिकल लेवल के ऊपर जो वेवलेंथ है, बड़े वेवलेंथ है, लोअर फ्रीक्वेंसी एंड हायर वेवलेंथ, दैट इज यांग. दैट इज नॉन सब्सटैंशियल कैटेगरी. और सब्सटैंशियल कैटेगरी में हायर फ्रीक्वेंसी, लोअर वेवलेंथ. ठीक. तो एक भौतिकता के नजदीक है. वन इज नियरर टू फिजिकल, द अदर इज नियरर टू metaphysical. Yin is closer, more akin to physical. Yang is more akin to metaphysical. समझ में आ रही है? लेकिन अगर दोनों एक ही चीज से बनी हुई है तो हमारे पास समझो यिन की कमी हो गई, अचानक यांग की कमी हो गई. अगर यांग की कमी हो जाए और लाइफ में यांग की जरूरत है तो यिन उस जरूरत को पूरा करने का प्रयास करेगी. बिकॉज द प्रोसेस मस्ट बी कंप्लीटेड. ध्यान रहे कि यांग हैज नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट हैज नो अदर डिजायर than a desire to disturb, to change the status. जो कुछ भी है उसको चेंज करेगा आंख मूंद के, और कुछ नहीं करना है. कैसे चेंज करें, क्या करें, नथिंग. इट विल नॉट थिंक ऑफ इट. इट हैज नो अदर एजेंडा. Yang force is a force which always wants to change. It has no other agenda. इसके पास दूसरा कोई कार्यक्रम नहीं है, ये केवल चेंज और डिस्टरबेंस करता है. Yin has single most important agenda. कौन उसका एक ही एजेंडा है क्या? यांग के कारण जो कुछ भी चेंजेस हो रही हैं उसको अंडू करें, उसको रेजिस्ट करें, उसको कंटेन करें, उसको डिसिप्लिन करें, उसको रोकें. यांग के अगेंस्ट काम करना है उसको. तो यांग के अगेंस्ट हम जो कह रहे हैं ना, एक्चुअली इट इज नॉट अगेंस्ट. यांग इज वेरी अनस्टेबल. तो यांग को डिसिप्लिन करने का काम करती है. यांग को कंटेन करना माने उसको रिस्ट्रिक्ट करना माने. when we say that yin is restricting force, yin is responsive force, what does it mean? It wants to make yang a little more stable. और जब yin उसके साथ जुड़ती है तो it becomes visible and understandable. If yin were not there, we would not have understood and perceived what is yang. एक ही है, दोनों वेव्स हैं. लेकिन yin में भी yang है. यिन और यांग दोनों के बल, दोनों की मैग्नीट्यूड हम मेजर करते हैं यांग के टर्म्स में. The intensity of both forces, yin and yang, is measured in terms of yang only. Hello? बहुत ध्यान से सुनिए, सारी बात कल रिपीट की गई थी और आज भी हम ट्राई कर रहे हैं रिपीट करने का, ताकि आगे की बात आपकी समझ में आती रहे. तो कभी कभी यू विल सी दैट yin is more yang than the yang itself. Why? How it is possible? Because they are made of waves only. वेव की फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन उसमें फोर्स ज्यादा आ गया तो चेंज हो जाएगा. दैट इज मोर यांग. मान लीजिए कि यू एंड योर स्पाउस, a male and a female,
both are residing in a house, in a flat. If the male is in bathroom and some guest comes, or maybe कोई business partner या जिसके साथ में you have some obligations, monetary obligations or some kind of obligation, कोई बाहर से आता है, उसने उधार दिया हुआ है, पैसा मांगने के लिए आता है, और husband does not want to face, उस समय बाहर निकल करके कौन जाएगा? वाइफ जाएगी. So wife is doing the function of yang. How she can do it? To certain extent she can become yang. कुछ वो yang वाला काम कर सकती, उतना yang नहीं कर सकती है जितना yang खुद कर सकता है. लेकिन दोनों वेव्स हैं. हायर वेव्स उसमें भी होंगे, लोअर इसमें भी होंगे. हायर और लोअर उसमें भी होंगे, हायर और लोअर वेव्स इसमें भी होंगे. So the intensity of both yang and yin is measured in terms of yang. yin और yang के बल का माप, कितनी yin है, कितना yin कितना yang है, ये मेजर कर सकते हैं आप. yin कितना yin है ये मेजर नहीं किया जाता है. yin में जितना कम yang होगा उतना yin ज्यादा है. तो दोनों को अगर मेजर करना, if we want to talk about the quality of yin and yang, we talk about in terms of yang of yin and yang of yang. अगर हम क्वालिटी की बात करें तो yin और yang की क्वालिटी yang के टर्म्स में हम डिस्कस करते हैं. दोनों एक ही चीज से आई हैं, रूप ले सकती है. yang है, yang होते हुए भी yin का काम कर सकती है. yin है, yin होते हुए भी yang का काम कर सकती है. लेकिन जो yin है वो yang का काम उतना ज्यादा नहीं कर सकती जितना yang स्वयं कर सकता है. जो yang है वो yin का इतना काम नहीं कर सकता जितना yin स्वयं कर सकती है. दैट इज ट्रू. एम आई क्लियर? क्या हम आपको जो बता रहे हैं ये समझ में आ रही है? हाँ सर. जरूरत पड़ने जी पर सर. yin yang का फंक्शन कर सकती है और yang yin का फंक्शन कर सकता है. लेकिन yin जितनी yin हो सकती है स्वभावतः, नेचुरली, उतना yin yang नहीं हो सकता. और yin जितनी yang हो सकती है उतना yang नहीं हो सकती जितना yang स्वयं yang है. समझ में आ रही है? yin और yang basically they are made of what? Wavelengths. They are bundles of wavelengths. Different wavelengths, different frequencies. Higher frequency, more substratic in nature, more structural in nature, more physical. Lower frequency, more functional. अभी ये बात समझ में आ रही है? हमने आपको एग्जाम्पल दिया हस्बैंड वाइफ का, और दूं एग्जाम्पल? जी सर. ये बताइए कि क्वेश्चन है. एक होता है घोड़ा, घोड़े की सवारी हम लोग करते हैं भारत में. पाकिस्तान में गधे की सवारी होती है. गधा और घोड़ा इन दोनों में कौन ज्यादा यांग है? घोड़ा. घोड़ा. और गधा yin है. लेकिन गधा यांग का काम कर सकता है कि नहीं? जरूरत पड़ने पे कर सकता है. और जरूरत पड़ने पे बोझा ढो सकता है कि नहीं घोड़ा? कर सकता है. In case of necessity, the horse can function like a donkey, and a donkey can function like horse. नहीं? But horse can be more yang. Donkey cannot be as yang. It can behave like yang, yes, but to a certain limit. Do you understand what I mean to say? Yes sir. A male can be more yang. Possibility है, but not necessary. सर मेरा क्वेश्चन है सर.
नेचर है यांग, और फीमेल यिन है बाय नेचर, बट फीमेल कैन बिहेव लाइक यांग, शी कैन बिहेव लाइक मेल्स in certain conditions if required, right? सर Now मेरा एक this क्वेश्चन है yin सर। and yang are available in a mixed form, which is known as chi. Now chi is what? It is bundle of waves. There are some longer waves and there are some shorter waves. The chi can be yang naturally and the chi can be yin naturally. So chi can be yin dominated, chi can be yang dominated. But the yin chi can behave as yang chi up to a certain limit, and yang chi can behave as yin chi up to a certain limit. सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। जैसे आपने बोला कि जो शॉटडाउन आता है वो यंग है, क्या होता है? जो शॉटडाउन आता है वो यंग है। अच्छा, हाँ। जैसे पैरालिसिस का अटैक वो तो शॉटडाउन आता है, ब्लड तो वो प्रेशर, क्या यंग है? मेरी बात समझिए। Paralysis, what happens? His question is paralysis. What will you call it? Yin condition or yang condition? पैरालिसिस हो गया। कैसे होता है पैरालिसिस? क्यों होता है पैरालिसिस? हाई ब्लड प्रेशर के कारण। पैरालिसिस क्यों होता है? हेमिप्लीजिया क्यों होता है, या कोई भी प्लेजिया क्यों होता है? व्हाई एनीप्लेजिया, हेमिप्लीजिया और पैरालिसिस, व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। What does it do? High blood pressure, how does it cause hemiplegia or paraplegia or anything? It causes, maybe because of rupture of some blood vessel. किसी blood vessel के फट जाने के कारण, नहीं, हेमेटोमा बन जाने के कारण पैरालिसिस हो सकता है। तो रप्चर क्या है? यांग है कि यिन है? यांग है। इसका रिएक्शन क्या हुआ? इसका रिएक्शन पैरालिसिस है। In response to this yang, to arrest this yang, to arrest this, इसको अरेस्ट करना है। क्या करें? तो ये जो यांग है ये क्या करेगा? ये बिल्कुल तोड़ फोड़ करके यिन को क्या करता है? यांग ट्राइज टू ब्रेक द बाउंड्रीज ऑफ यिन। यांग ट्राई करता है यिन की सीमा को तोड़ने का, बढ़ाने का, एक्सपैंड करने का। और यिन क्या करता है? यिन इज वेरी इलास्टिक, जरा सा भी धक्का यांग देगा तो चली जाएगी पीछे, बट अल्टीमेटली दिस विल कम बैक। ठीक है। सब पैरालिसिस में क्या कंडीशन हो जाती है? यांग हो गया ब्लड वेसल्स में, नर्व्स को क्या हो गया? यिन हो गई। इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ दैट, ब्लड की अभी सप्लाई बंद हो गई बहुत जगह, तो जो जरूरत नहीं थी वो सारे नर्व्स खत्म हो गए। अब उनको ब्लड सप्लाई बहुत थोड़ी मिल रही है या नहीं मिल रही है, लेकिन स्लोली इट विल स्टार्ट गेटिंग, इवन इफ यू डोंट डू एनीथिंग, it will try to recover to some extent, not fully, है ना? लोग कहते हैं कि नहीं रिकवर करता है, आप कुछ नहीं करो तब भी धीरे 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 जो पैरालिसिस साल भर पड़ा रहेगा, 1.5 साल 2 साल पड़ा रहेगा, फिर मूवमेंट धीरे धीरे आने, उतना नहीं आएगा लेकिन आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर जगनेश्वर। ठीक है, तो ये ची क्या है? ची कैन बी यिन डोमिनेटेड, ची कैन बी यांग। तो हम कहते हैं यांग ची हो सकती है, यिन ची हो सकती है।
और एक्चुअली ची इज मूविंग। तो जब प्रोसेस शुरू होता है तो यांग, इट इज यांग डोमिनेटेड, और जब प्रोसेस खत्म होने लगता है इट बिकम्स यिन डोमिनेटेड। You see, chi is a process. So when it starts because of yang force. So in the beginning of the process, it is yang dominated. Chi is yang dominated. It starts with yang. And later it becomes yin dominated. पहले ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा, yang बढ़ता रहेगा. It is yang. And then what happens? There is a rupture. And you get paralysis. That is yin. ठीक है। और हम क्या है? पेशेंट क्या है? ची है। पेशेंट क्या है? ची। ची है। ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांटेड टू एम्फसाइज इज दैट यिन एंड यांग बोथ आर bundles of wave, right? In the yin category, meaning thereby the critical line of differentiation of yin and yang on the yang side or on the yin side, on both sides there are many kinds of waves, and every variety of wave, wood variety, fire variety, earth variety, metal variety, and water variety. Wood variety of wave has one kind of common nature. Wood variety की जो ची है उसका एक कॉमन नेचर है। इसी तरह फायर वैरायटी की ची का कॉमन नेचर है, अर्थ वैरायटी का एक कॉमन नेचर है। ये कॉमन नेचर हो सकता है, but the wood of liver, the wood of heart, the wood of spleen, the wood of kidney, they can differ. Differ in what? Intensity. How will you measure? In terms of yang. wood की wood, हार्ट की wood, स्प्लीन की wood, लंग्स की wood, किडनी की wood, सबका नेचर एक जैसा है, ये यांग है। लेकिन लिवर की जो वुड होगी वो बहुत यांग होगी, स्प्लीन की वुड होगी वो बहुत यांग होगी, फायर किडनी की वुड होगी वो बहुत यांग होगी, हार्ट की जो वुड होगी वो हल्की होगी, वो उतनी यांग नहीं होगी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि इंटेंसिटी ऑफ यांग वी मेजर इन टर्म्स ऑफ यांग एंड इट इज डिफरेंट। नेचर सबका एक है। क्या नेचर क्या है? फंक्शनल नेचर है, मेटाफिजिकल नेचर है, यांग है नेचर में। फ्रीक्वेंसी इज लेस than the critical frequency which will give it the effect of yin. वो जो क्रिटिकल लेवल की फ्रीक्वेंसी है या वेवलेंथ है, नहीं, उस फ्रीक्वेंसी की क्रिटिकल लेवल से अगर कम है फ्रीक्वेंसी तो यांग हो जाएगी, या वेवलेंथ internet was unstable, so nothing much I can do. So now what I was telling you. So we now know that we are chi. So we are chi means we have both yang variety of force and yin variety of force, right? So we have both structure and function. They cannot be separated. Number one, yin and yang, the genesis is same. They are waves. They are made of one thing. They appear in two ways, yin and yang. Yang has no responsibility, sense of responsibility, no desire, nothing. All desires lie with chi.
It is chi that wants to be happy. It is chi that wants to be healthy. Neither yang nor yin. So अभी काफी कुछ समझ में आ रही है ना? If still if you have, अब देखते हैं, आगे चलते हैं. If you will not understand, I shall repeat again. But if you keep on understanding, then there is no need to revise it. So we'll go ahead. Now, Sir, may I ask one question? Yes, go ahead, ask. Put on your camera. We are referring Why don't you put on your camera? I don't know, sir. Okay. Actually, I am checking. I am putting the video. I am not sure why it is not coming. I am Okay, trying. okay. Go ahead, go ahead. Go ahead, ask question. Sir, we are referring yin and yang, and yin chi and yang chi. So when we say chi, we are saying like yang plus yin. Then we are referring yang chi and yin chi. So because I could not differentiate yin and yang and yin chi and yang chi. Is there any difference? There are two things to differentiate. Basically, there are many things. There can be a whole table. But remember two things. Higher wavelength is yang. Lower wavelength is yin. Lower frequency is yang. Higher frequency is yin. I understand yin and yang, but yin chi and yang chi. So, okay, yin and yin chi. Is there any difference? Yin and yin chi. Wait. Now, chi has many waves. There are waves of different wavelength and different frequencies. The chi has smaller wavelengths also and higher wavelengths also. But if higher wavelengths are more in that bundle of chi, then we call it yang chi in quantity. When higher waves, higher wavelength wala wave, the waves with higher wavelength, if they are more, they are dominant in that bundle of chi, we call it yang chi. Hello, Shiva. When in that ball you have Yes, sir. more number of waves which are of smaller wavelength or higher frequency, colder in nature, heavier in nature, denser in nature, more solid in nature, more physical in nature, we call it yin chi. Both are there. But which is dominant? Which is predominant? When we say yang chi, that doesn't mean that it doesn't have yin. It has yin. When we say Shiva is very weak, what does it mean here? Doesn't mean that you cannot do anything. It is only relative term. It's only relative. Yin chi and yang chi. They are only relatively yang and relatively yin. Yin and yang are relative terms. They are coming out of the same thing, waves only. Higher wavelength, if they are more, we call it yang chi. Lower wavelength, if we have more, we call it yin chi. Is it clear to others, excepting Shiva? Yes, sir. प्रवेश जी, आपको समझ में आ रहा है यांग ची और यिन ची? जी सर जी। लेकिन उस यांग ची में भी कुछ वेव्स यिन वाली हैं, and if necessary those waves will work, but it will not be as yin as the yin. yin yang का काम कर सकता है, yang yin का काम कर सकता है to certain extent. Simple बात कर रहा हूं, I am talking very simply. Shiva, what I mean to say is that man can function like a woman, many things, but not exactly to that extent. Can he bear child? No.
Can he raise family? No. Can he protect culture and religion? No. If man went to protect culture and religion, there will be catastrophe. If the women are not respected, society will break. And you can see this. This is happening in the world all around you. When the women in the society are deprived of their due status, the society will be self-killing, self-destruction. Maybe today, maybe tomorrow. Nobody can help. हमारे यहाँ क्या है, कहा जाता है ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ति देवता. है ना? It's all because of this. So what we are trying to do is, we are trying to say that as and when necessary, the behavior of the chi, no behavior, no function is possible without chi. But under different circumstances, the chi can behave in a little different way. We are chi, isn't it? We are chi. When you are face to face with me, your behavior is of a certain type. You are behaving like a student. हम लोग ची हैं, नहीं? आप भी ची हैं, मैं भी ची हूं. लेकिन आपका बिहेवियर इस समय इस क्लास में कैसा है? स्टूडेंट के जैसा है. लेकिन यही ची जब आप अपने घर पे हैं, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है कि नहीं? अपने स्पाउस के सामने चेंज हो जाता है कि नहीं? छोटे बच्चे के सामने आपका बिहेवियर अलग है, और आपका बच्चा 20 साल का 25 साल का हो गया, आपका बिहेवियर अलग हो जाता कि नहीं? आप तो वही हैं. See, your behavior with a small little kid of 2 years, 1.5 years, 2 years is different. And when you are behaving, or when we are interacting with your child who is 18 years, 20 years, or 25 years, your behavior is different. When you are with your sister, you behave differently. When you are with your wife, you behave differently, isn't it? The chi is same. So you cannot say that this chi is just green color, this chi is just wood. In the wood, you have all varieties. But overall, if you see, it is wood dominated. Fire dominated chi. At the fire point, you have more such waves which are fire-like, which have the characteristics of fire. Continued motion. All this which you are asking Shiva, you must come to level 1 and level 2 if you want to really learn all this. And let us go ahead, because we are not here to do level 1 and level 2. Right? Sure, sir. I understand, So, sir. no Thank further questions will be Yeah, okay. entertained. Okay. I have tried, I have seen your day 1 highlight. Try to write even today's and post it so that I shall see what you have understood. Because I saw that you have not very well understood, neither you nor Mandakini. Therefore, I have revised again, and what I want to tell you is this. Okay, sir. What I want to tell you is this, Okay, sir. that this chi is, when we say it is yang chi, doesn't mean it is always yang, yeah. In comparison to some other, when it is facing some other kind of chi, it will become like fire. And when it is facing to some other kind of chi, it will become like what? The same chi can behave in a different way. Why? Because they are all waves. Collection of waves. No, don't ask me what is wave. No. Don't ask me that. There is, Understand, sir. there is nothing which is solid.
Even stones are not solid. Stone is made of what, Shiva? Have you ever studied physics? Yes, sir. Everything is wave, isn't it? Yes, sir. In the physics itself, there are multiple theories. Quantum So- theory is coming, wavelength. So But there itself, quantum- the science is. We are not quantum theory will give, yes, we will come to quantum theory also. In BG Meridian, we will see quantum theory is also applied. But here, which is very simple, the most fundamental particle, what is it? The most fundamental thing, whatever it is, whether it is a steel, iron, wood, soil, water, vapor, gas, each and everything is constituted of what? Waves, isn't it? Yes, yes. The most fundamental particles, what are they? Nothing. There is nothing solid. These galaxies, these planets, what are they? They're waves. They are waves, and they have gone through process. Different processes have made them, have forced them to get manifested in different ways. सारे वेव्स का अलग अलग प्रकार की प्रोसेस हुआ. उस प्रोसेस के का प्रोसेस माने एक्शन, कर्म. उस कर्म का परिणाम अलग अलग हुआ. कुछ आयरन बन गया, कुछ गोल्ड बन गया, कुछ कोयला बन गया, कुछ हीरा बन गया, कुछ प्लैटिनम बन गया. Because the waves are processed in different ways. They are arranged and bound together in different ratios. Isn't it? And they can again be disintegrated also. आज नहीं हो रहा है, लेकिन होगा. कर सकते हैं, possibility है. Have you heard of a stone known as पारस पत्थर? केतन, आपने सुना है पारस पत्थर की कहानी सुनी है? एक पत्थर होता है, उसे कहते हैं पारस पत्थर. सुना है? पारस पारस सुना है, पारस का नहीं सुना. पारस, पारस, P for Patna, A for Ahmedabad, R for Rangoon, A for Ahmedabad, S for sugar. पारस. पारस पत्थर का ऐसा गुण है, if you touch it with iron, सोना हो जाता है. आयरन क्या हो जाता है? ये कहानी है ना, but actually it is possible. If you met a physicist, he will say, yes, there is every possibility, because everything is made of waves only. The configuration and arrangements and the process, if you do the right kind of process. दुनिया पागल हो रही है सोने के लिए. There is no difference. जो लोहे में वही इसमें, but when they are together, one is working in a different way. उसके क्वालिटीज अलग है. सोने की क्वालिटी अलग है, इसकी क्वालिटी अलग है. आयरन सारे जंक ऑक्सीडाइज हो जाता है, सोना ऑक्सीडाइज नहीं होता, ऑक्सीजन को पकड़ता नहीं. They behave differently. The same waves, when they are in the form of gold, they behave differently. When the same wave, they are in the form of iron, they behave differently. Similarly, chi, when they are, sometimes they are behaving good, but in some circumstance, it will start behaving like fire. It will start behaving like metal, water, whatever. आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, उतना ही से समझिए. बहुत ज्यादा डीप में जाएंगे तो और गड़बड़ होगी. If you went into more depth, you will require a lot of contemplation, lot of thinking, which will be difficult for all of you. So अभी मैंने जो कहा है, a man behaves differently under different circumstances. A man behaves differently with different people. आप पेशेंट के साथ जैसा बिहेव करते हैं, वैसा बिहेवियर क्या आप अपने दूसरे लोगों के साथ भी करते हैं क्या? नहीं करते. डिफरेंट है. मान लो आप अपने सबऑर्डिनेट के साथ कैसे बात करते हैं? हाउ डू यू टॉक टू योर सबऑर्डिनेट?
like his boss. But when you meet your boss, how do you behave? You behave like subordinate, isn't it? जब आप अपने बॉस के सामने जाते हैं आप सबॉर्डिनेट रहते हैं, जब आप अपने सबॉर्डिनेट के पास जाते हैं तो आप उनके बॉस के जैसा बिहेव करते हैं। सो बिहेवियर चेंज होता है कि नहीं होता? This is the fundamental requirement of understanding in order to understand BG meridians. इसके लिए कल और आज भी थोड़ा सा हमने आपको बताया कि ची क्या है, यिन यांग क्या है, and therefore I have taken time to tell you what is chi, what is yin, what is yang. Unless you know it, you will not understand the BG meridians. ठीक है? So how they behave, what they do, all this we will have to understand. So let us do something towards BG meridian. Let us go one step ahead. आप लोगों ने दो बातें की, दो तरह की मेरिडियन है। जो भी ची, whatever chi has been generated, that has been segregated. कैसे सेग्रीगेट किया? यिन ची अलग कर दिया गया, यांग ची अलग कर दिया गया। यांग ची इस कहां जा रहा है? यांग मेरिडियंस में। यिन ची कहां जा रहा है? यिन मेरिडियंस। Whatever has been generated by an organ, the waves, they have been segregated and divided into two parts, yang and yin. Yang portion of that same chi which has been generated by any organ has been put in the yang meridian, and the yin chi is available in the yin meridian. Is it clear, Shiva? Yes, sir. Who are the generators? How this is generated? This we have seen. This we know. So this chi which has been generated has already been segregated. So we have a set of yin meridians and a set of yang meridians. ये हम लोग जानते हैं कि कैसे जनरेट होता है ची, और हमारे पास यिन मेरिडियंस की सेट है और यांग मेरिडियंस की सेट है। इनमें आपस में कैसा रिलेशन है, कैसा है, ये हम लोग को देखना होगा। लेकिन इससे पहले कि हम इन मेरिडियंस में आपस में देखें क्या क्या इनकी कॉमनैलिटी है, कैसे कैसे ये आपस में कनेक्टेड है, उसके पहले हमें एक बात समझनी होगी। क्या समझनी होगी? ये सारा जो एक्यूपंक्चर का ज्ञान है, बिफोर वी गो टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वन ची मेरिडियन एंड अदर yin meridian and other yin meridian, or other all the yin meridians or all the yang meridians, we have to understand another thing. What? We will have to understand that why this acupuncture? What are we trying to do? We are trying to ensure that all the organs and parts of our body and mind, they function as they are expected to function. हम किस लिए काम कर रहे हैं? ये देखने के लिए कि हमारे शरीर, मन और मस्तिष्क, शरीर और मन दो पोर्शन है ना, दो बातें हैं। हमारे इस ह्यूमन बीइंग में, मनुष्य के दो कैटेगरीज है, एक शरीर है, ऑर्गन्स है, और दूसरा मन है, जिसको भगवत गीता में क्या कहा गया? भगवान की परा और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति में क्या आता है? मन। अपरा में क्या आता है? बॉडी। अष्टधा प्रकृति है।
नहीं, अपना भारतीय ज्ञान क्या कहता है? Our Indian knowledge tells that we have two facets, para and apara. What are they? The 5 elements: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी. They are apara. What is para? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार. मन, बुद्धि और मन, चित्त और अहंकार. These 3, they are para, prakriti. So yin and yang both are there. दोनों है, yin है, yang है. हमें क्या इंटरेस्ट है एक्यूपंक्चर हम क्यों करने जा रहे हैं? सो दैट हमारा मन और हमारा शरीर दोनों स्वस्थ रहे. Why we don't want to go for learning acupuncture? Because we want to see that our both body and mind are healthy. Healthy means they function as they should function. They are expected to function. यही तो है, इसीलिए तो कोई भी थेरेपी करते हैं हम, करते हैं ना. तो फंक्शन के लिए क्या होना होगा? इट इज दैट ची विच इज मूविंग. उसी को हम कहते हैं लाइफ, मूवमेंट. यांग इज मूवमेंट, यांग इज लाइफ. तो हम किस यिन, दो यिन इज नोन एज that which is we attribute no movement as one of the characteristics of yin. yin का एक गुण हम क्या कहते हैं? no movement. लेकिन no movement का मतलब ये नहीं है कि at rest. no movement का मतलब है कि movement को resist करता है. शिवा, movement का क्या मतलब है? जो movement को करता है. no movement का क्या मतलब है? जो movement को oppose करता है, डाइल्यूट करता है. ठीक है, तो हमें यिन भी चाहिए और यांग भी चाहिए, लेकिन यिन भी वैसा यिन चाहिए जिसमें थोड़ी मूवमेंट हो. देन ओनली वी कैन वर्क. यिन कैसा चाहिए? जिसमें थोड़ी मूवमेंट हो. कितनी मूवमेंट? जितने से हमारा काम चल सके. ऐसा नहीं यिन मिल गया, पता लगा बर्फ की सिल्ली मिल गई, कुछ काम ही नहीं हो सकता. पानी चाहिए, जहां बर्फ चाहिए वहां बर्फ चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन पानी चाहिए मोस्टली. ठीक है, तो हमें यिन ची भी ऐसी होनी चाहिए जो मूव करे, और यांग ची तो खैर मूव करेगी करेगी, वो तो यांग तो मूव करता ही करता है. यिन ची वी वांट, व्हाट काइंड ऑफ यिन ची वी वांट यिन ची दैट कैन मूव अ लिटिल बिट. Because life is movement, and yang is, of course, it is moving, no problem. So we are interested in function of mind and body as they are expected to function. तो हमें yin chi भी चाहिए और yang chi भी चाहिए. And when we manipulate, we regulate. What is acupressure, acupuncture? Acupressure, acupuncture क्या है? It is a therapy which works by regulating chi. What chi? Yin chi and yang chi. Acupuncture क्या है? What is acupuncture and acupressure? It is a therapy which works by regulating yin and yang chi. अब देखो, न्यूबॉर्न बेबी, द न्यूबॉर्न बेबी, अभी जो पैदा हुआ, आज पैदा हुआ, अभी जो डिलीवरी हुई, वो बेबी में कितना मूवमेंट रहता है और किस तरह की मूवमेंट होती है? कोई भी जीव हो, कुछ मिनट से लेके या कुछ सेकंड से लेके और साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक में जाकर के पूरी तरह से चलने लगता है. जैसे इंसान का बच्चा, ए चाइल्ड
a human child, when it is newly delivered, newborn child, it doesn't stand and move, it crawls. मनुष्य का बच्चा क्या है? क्रॉल करता है। कैसी मूवमेंट है उसकी? पैरेलल टू अर्थ। कैसी मूवमेंट है? जो छोटा बेबी है 6 महीने का, पहले तो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, और अगर है भी तो माँ के पेट पे अगर उल्टा करके रख दिया या कुछ रख दिया तब भी थोड़ा मूवमेंट है। वो भी कैसा है? पैरेलल टू अर्थ। शुरू में बेबी का मूवमेंट कैसा है? पैरेलल टू अर्थ। खड़ा होके नहीं चलता। क्यों नहीं चलता खड़ा होके? कब चलेगा खड़ा होके? When will he stand up and walk? यांग ची जब बढ़ेगी तब। When he will have necessary and sufficient yang chi. But still he is moving. He is moving, but he doesn't have sufficient yang. If he had sufficient yang, he will become perpendicular straight. So the chi which goes straight, that is perpendicular to the surface of earth, is definitely yang dominated. So can we say that the 12 meridians which we are seeing, when we walk perpendicularly, all these meridians are perpendicular. Right? Human beings are the only living entity which has perpendicular spine. आपने देखा ये? मनुष्य ही एक ऐसा जीव है, प्राणी है, जिसकी स्पाइन कैसी है? परपेंडिकुलर टू अर्थ हो सकती है। इसको जब लेटना होता है तो क्या करते हैं हम? पैरेलल हो जाते हैं तो यिन आ जाती है। जब हम पैरेलल हो जाते हैं तो क्या होता है? यिन डोमिनेट्स। जब हम खड़े होते हैं तो क्या व्हाट डोमिनेट्स? यांग डोमिनेट्स। व्हेन यांग डोमिनेट्स वी आर वर्टिकल। Similarly, the child, newborn child, will become vertical when he has necessary quantity of yang chi. So Chinese meridians, they are vertical, top to bottom and bottom to top. They are vertical. That gives us to understand that Chinese meridians are, they do not have sufficient yin chi that can be tapped to regulate yin generation and distribution in the whole body and mind. yin chi की डिस्ट्रीब्यूशन पूरे माइंड और बॉडी के लिए करने के लिए सफिशिएंट yin इस चाइनीज मेरिडियन में है ही नहीं। ये समझ में आ रही है क्यों? Why I am saying so? Dr. Shah, Yes, sir. are you convinced? Yes. Very good. So Chinese meridians are the meridians who are talking about only yang chi, and therefore they cannot deal with those ailments which require sufficient yin chi manipulation. चाइनीज मेरिडियंस में ज्यादा yin है ही नहीं, इसलिए इन मेरिडियंस के पॉइंटों से हम ऐसे रोगों का इलाज जिसमें हमें yin chi की चाहिए, उपलब्धि चाहिए, yin को कम करना हो किसी ऑर्गन के, या किसी ऑर्गन की yang को yin को बढ़ाना हो, yin की रेगुलेशन के लिए बहुत अच्छा टूल ये चाइनीज मेरिडियंस नहीं है। जितनी चाइनीज विजडम है ना, चाहे वो बुक ऑफ चेंजेस हो, चाहे कुछ भी हो, बड़े बड़े डिस्कोर्सेस होते हैं, दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट रेगुलेशन ऑफ यांग ची। मौसम का हाल, इमोशन का हाल, ये सब क्या है? इमोशन क्या है? यांग है। मौसम क्या है? यांग है।
फंक्शन क्या है, यांग है। ये सब कर सकते हैं आप कुछ भी, वो भी 5 एलिमेंट से नहीं कर पाते ये लोग। व्हाट वी नीड इज वी नीड सफिशिएंट यिन। सपोज हमें सपोज बहुत यिन चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, इन वर्टिकल मेरिडियंस में ज्यादा यिन नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यिन नहीं है। देखो हमने बताया था आपको, अगर याद हो, लेवल 1 लेवल 2 में देयर आर 2 फैमिलीज, यिन फैमिली एंड यांग फैमिली। हमने आपको बताया था 2 फैमिली होती है, यिन फैमिली के ऑर्गन्स और यांग फैमिली का ऑर्गन्स। यिन फैमिली में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं केतन भाई? लिवर, हार्ट, स्प्लीन, किडनी, लंग्स, पेरिकार्डियम। ना। lungs, lungs, water kidney, heart. ये यिन फैमिली है, नोट करो केतन। हाँ सर। यिन फैमिली में कौन से 3 ऑर्गन हैं? हाँ, लंग्स, हार्ट, किडनी, वाटर किडनी। Water kidney. वाटर किडनी। और यांग फैमिली में कौन कौन है? उसमें लीवर, लीवर आएगा, एक फायर किडनी आएगी, और एक और Spleen. स्प्लीन। स्प्लीन। तो अब सवाल ये हो गया कि चाइनीज ने ये कह दिया कि अच्छा, लिवर ऑर्गन को यिन चाहिए कि नहीं चाहिए? लेट मी अंडरस्टैंड फ्रॉम ऑल ऑफ यू, स्पेशली द न्यू पीपल। मंदाकिनी जी, you don't mind if I ask you a question, huh? Don't. I have already asked for your apologies. क्वेश्चन पूछने से हमें मालूम पड़ता है कि आप कितना समझते हैं। लिवर को यिन चाहिए कि नहीं चाहिए? उसको स्ट्रक्चर चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। नहीं, यस, चाहिए। आई थिंक सो। लेकिन लिवर जो जनरेट करती है उसको अपन, चाइनीज ने कहा कि दे डू नॉट जनरेट सफिशिएंट यिन फॉर देमसेल्व्स आल्सो। लिवर। So what they do is they draw yin chi from their meridian. ये है चाइनीज फिलोसफी। I stand to say that they are wrong. It generates yin, but that yin generated by liver is not visible in the liver meridian because it is vertical. It is not sufficiently yang. Sufficiently yin chi shall be flowing horizontally, parallel to earth. आप समझ रहे हैं मैं कहां लीड कर रहा हूं, आप सबको कहां ले जा रहा हूं? Where I am taking you, leading you to understand that yin chi, liver also has yin, spleen also has yin, fire kidney also has yin, but that yin, you cannot find that which is sufficiently yin, you will not find it in the vertical meridians. So if you really want to have yin of liver, where will you find? You will have to find how this liver's yin chi which is generated, how it is flowing. It has to flow horizontally. So therefore, and we do not have any horizontal meridian of liver. We do not have any horizontal meridian of heart. We do not have horizontal meridian of spleen, kidney, etc., etc. हमारे पास हार्ट, लिवर, etc. की हॉरिजॉन्टल मेरिडियन नहीं है। हॉरिजॉन्टल होगी ना। मेरिडियन एंड चैनल्स आर व्हाट? चैनल इज अ प्रोसेस जहां से ची फ्लो कर रही है। अगर यिन ची है तो कैसे जाएगी वो? नहीं, पानी जैसे फैल जाता, पानी यिन है, कैसे फैलता है? और गैस कैसे जाता है? बर्नर में जो फ्लेम होता है वो कैसे जाता है? ऊपर की तरफ जाता है। यांग है वो। तो वर्टिकल मेरिडियंस में तो सारे फ्लेम हैं। All the vertical meridians, what kind of chi is moving in the vertical meridians, Chinese vertical meridians?
that which is sufficiently young. So we will have to find out and trace. Where shall we find yin? And if we find that, then we can deal with most chronic diseases also. Whether it is liver cirrhosis, whether it is whatever it is. बात समझ में आ रही है? For example, suppose migraine. Have you heard of this? Migraine, all of you must have heard. सबने माइग्रेन का नाम सुना हुआ है ना? माइग्रेन भी 3 तरह की हम लोग कैटेगरीज बनाते हैं. जो गॉल ब्लैडर टाइप का माइग्रेन होता है, उसका क्या रीजन कहा गया है टीसीएम में? द गॉल ब्लैडर वैरायटी ऑफ माइग्रेन, व्हाट इज द कॉज ऑफ इट? व्हाट द टीसीएम सेज? क्या होता है? हु कैन टेल मी? माइग्रेन सुना है ना सबने? यस सर. माइग्रेन में क्या होता है? सर में दर्द होता है. माइग्रेन में अप भयंकर. राइज होता है हाँ जी, सर. यांग राइज हो जाता है. हाँ, यांग राइजिंग. अच्छा, यांग क्यों राइज होगा? यिन और यांग दोनों साथ में रहते हैं, दोनों को अलग नहीं कर सकते. अभी तक, कल तक तो नहीं था माइग्रेन, आज माइग्रेन हो गया. इसके मतलब कल तक तो वो राइज नहीं कर पा रहा था. लिवर का यांग कल तक माने he didn't have migraine till yesterday. He has now migraine today. From today, well, it has started. Or slowly started or suddenly started, whatever. Why? Because the yang of liver chi has gone up, has rise. So we say yang rising. Liver chi, liver yang rising. Have you heard of this? Liver yang rising, all of you? सुना है सबने? तो liver की yang, Yes, sir. till yesterday the yang was not rising. Why it was not rising? Yang should have risen. Yang should have gone up. But it was not going up. What had held this yang chi of liver till that period when he didn't have migraine? Who will hold the yang? Yang को कौन पकड़ के रखता है? yin पकड़ के रखता है. कौन पकड़ के रखता है? yin. Who can yin chi. hold the yang of liver from rising? The yin. Hello. That means yang is naturally, it will go up. Yang will naturally go up. But yin was subjugating it, holding it, restricting it, disciplining it. yin ने उसको पकड़ के रखा था. इसके मतलब माइग्रेन किस लिए हुआ? यांग की अधिकता से हुआ कि यिन की कमी से हुआ? डॉक्टर शाह, why this migraine? Is it because of excess of yang of liver or a deficiency of yin of liver? Deficiency of yin of liver. और ट्रीटमेंट भी हम यही करते हैं, लेकिन तमाम दुनिया भर के 6, 7, 8 पॉइंट लगाते हैं. If we can trace where the hell the yin chi of liver variety is available and we tonify the generation of that yin variety of chi, what will happen? It will arrest the yang, migraine will go. अगर हमें ये मालूम हो जाए कि लिवर वैरायटी की यिन कहाँ है, थोड़ा उसकी जनरेशन बढ़ा दें, अपने आप यांग को अरेस्ट कर लेगी, माइग्रेन गया. हेलो केतन जी, समझ में आ रहा? बात समझ में आ रही है? हाँ सर. तो ये जो सफिशिएंटली यिन होगा और चलने के काबिल हो, ऐसा भी नहीं कि रुका हुआ हो, ये हमें कहीं मिलेगा दूसरी जगह. ये लिवर की मेरिडियन में लिवर 1 से लिवर 8 और लिवर 14 तक नहीं मिलेगा. ये वर्टिकल मेरिडियन में नहीं मिलेगा. ठीक है.
तो आपको आज हमने जो एग्जाम्पल दिया वो क्या दिया? वो ये दिया कि yang goes vertical and yin goes horizontal. This is the keynote, the highlight of this total lecture of today. Yang goes vertical, Vertical. and yin goes Horizontal. 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 आज की ये है. Today we have learned that yang goes vertical and yin goes horizontal. Remember this. ठीक है? जी सर, मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है सर. हाँ. ये आप बीजी मेरिडियन नाम कैसा आया सर? क्योंकि पहली बीजिंग बार से. सुन रहे. चलिए ओके बताएंगे. ओके. BG Meridian, it is a personal thing. I coined this name because my children Yeah. call my wife as BG. इसलिए And आपने those days when I was contemplating this whole philosophy and things, I used to be very busy. And I used to sit right in the morning and till 2, 3 in the afternoon. I never used to get up from the table. And I used to work for nearly a couple of months or maybe a little more, up to 3 months. And those days, my wife used to bring my tea and it used to get cold and I would not take it. Then she will bring some breakfast. I would not take it. That will also be spoiled. So she always used to get very angry. Suddenly one fine morning when I was working on these BG Meridian and I had come out and I had got the whole thing connected and I was so happy and elated. And suddenly I found my wife was screaming on me. I am not your servant and this, that, all that usual thing of wives, right? Suddenly I looked at her and I was so happy that all that screaming was going in vain. I was still smiling and laughing because I was very much happy from within. I had found something very new and very novel, the BG Meridian. So I put this name as BG Meridians because she had suffered. So her suffering gave this new BG Meridian. There are nearly 600 meridians that I plotted, and they are working wonderfully in those cases where you are unable to treat with your regular meridians. All this I shall tell you from tomorrow onwards. So today you have understood yang goes vertical, yin goes horizontal. Yes. So this is your second level. First level was understanding what is chi, what is yin, what is yang, and what are meridians. And where do you find the chi required for treatment? Chi required for function of every part and of body and mind. Where do you find the chi for the function of body and mind? In the meridians, from the meridians. Right? So we have seen 2 steps. Tomorrow we will see the 3rd step. Okay? And maybe tomorrow we may take a little more time or maybe so come prepared and try to understand and write down. आप जैसे आपने लिखा आज बहुत अच्छा लगा मुझे, मंदाकिनी जी ने और शिवा, both of you wrote a synopsis kind of a thing of the whole lecture. Do write it and post it in the group, and all of you should try to find good and bad in that synopsis, whatever they write. You should put your comments. Give some time. You can also put forth your understanding. It was very good. I was very happy. Let me tell you, Mandakini and Shiva, both of you did a wonderful job by putting the highlights of the first day. I will request you to put the highlights of the second day as well in the group. Okay then? Good night. Good night. May I ask one question, sir? Good night. What do you say? May I ask one question, sir, in the today's session? Yes, please do ask. Sir,
you explained about child does not have sufficient yang chi to move. So the sufficient here meaning in quantity and quality, Yes, you're right. both are quantity only. Yes, quality and quantity, both. You're right. So the If it has to go vertical, because we are talking like yes. Hello. yes, sir. Hello, I couldn't listen to you. Yeah, I am just listening. Yeah, please proceed. Sufficient quantity of yang, that means quality and quantity both. Right? If you have sufficient quantity of yang in that child, the child will become vertical, can stand. Okay. Right? If it doesn't have sufficient, till it doesn't have yang, sufficient yang, it will be parallel to crawl. So that is sufficient means beyond the food taking for like say 1 year later. It can be few seconds, Patient few will moments. For some grow. insects, it is few seconds only. How can I understand? No, that there's no machine which will tell you, and it is different for different species. In case of men, human being, it is nearly an year. No, I understand that, sir. Different fish, different. Yeah, human year. What is happening? Like say, due to food taking of child, that yang chi is becoming sufficient. What is the base to become sufficient? What is? I can't understand what you are asking. How the child will, like say, initially when the born child, the child is unable to move because there is no sufficient yang chi. So there is no enough movement can be performed by the child. Okay. But after some duration, like say, let us take our human beings. So for human beings taking some time. So during that time, that yang chi will become sufficient so that the child can perform movement. Yes. So that the sufficient chi, how it arrives? What is the basis to become sufficient chi? It has 3 raw materials. The raw material is number 1 is air, food and the original chi. Food and original chi. So how much air it has taken in 1 day? How much air goes in? So how much chi will be generated? It takes 1 year continuously. He is breathing in, breathing in, breathing in, breathing in. So much of air has gone in. Necessary quantity and quality of air, even quality of air. If breath has so many qualities of air comes in. Breath is not very simple to understand. It's a big science of breathing. Similarly, food. What kind of food, when it should be given, at what stage, at what age? Right? So protection also, and giving more of yang. What we are trying to ingest in the child? Yang chi. And how that can be done? That can be done by intake of air and food. And how that air and food will come? And mixed with the help of original chi. Level 1 we discuss generation and distribution of chi. We discuss. And there may be some generation and distribution of chi. There may be some videos also. Maybe. Try to look for it. Yes, sir. I have seen your videos and all, sir. It's really good. And yeah, I looked at it. From that only, like, I understand that. But that sufficient chi is like how it is reaching is just, I am just thinking the concept. So I asked. Sufficient chi means, you see, there are 2 things. Yin is also increasing, yang is also increasing.
The chi is generated, yin type of chi and yang type. It is the triple Warmer mechanism which has the responsibility of generation and distribution. So that mechanism you will have to understand so that you will know. Okay. That we discuss in initially when you come and join courses, we discuss how it is generated and how it is distributed. Anyway. Yes, sir. I have gone through the documents, sir. Yeah. Thank you, sir. Okay.